Hi, welcome back to my channel. Today I'm going to answer your question that what disqualifies you from getting selected in an airline interview of a cabin attendant. So let's get started. So first of all, if you are a shy person and if you have social anxiety, then you should not go for this interview and you should not get into this particular profession, because every single day you would be meeting new people and you'll have to deal with n number of passengers each day on every sector, every flight. So you can just imagine that how many unknown people you would be meeting and handling with. So that's why this job is not meant for you if you are a shy person or an introvert, or if you are nervous when you talk to strangers. So I guess that is the thing which might disqualify you in an interview of a cabin attendant, because in that case you won't be able to represent yourself in front of the interviewer. So that might become a disadvantage for you. So just keep that thing in mind. Secondly, you cannot afford to have motion sickness or nausea or vomiting problem when you are flying, because you would be flying on a regular basis. So that's why आप एक दिन मेडिसिन ले लोगे, 2 दिन ले लोगे, बट आप कब तक वो चीज़ मतलब यू कैन नॉट जस्ट हैव मेडिसिन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर दैट. Other than that, if you have a scar or a cut mark or a boil or a burn mark or a tattoo on your visible body parts when you wear your uniform, then that can also disqualify you, because that is a big no in the airlines. If you are working as a cabin attendant or a ground staff, you just can't afford to have such tattoos or a cut mark or anything of that sort on your visible body parts when you wear your uniform. So there are some एयरलाइंस जहाँ पे अगर आपने फुल स्लीव शर्ट आप इंटरव्यू में पहन कर गए हो तो दे विल जस्ट रोल अप योर स्लीव्स एंड जस्ट चेक कि कोई कट मार्क या कोई टैटू तो नहीं है. So that's why I always tell all the students, all the aspirants of this particular field, that please do wear a half sleeve shirts, especially for the girls. Like boys, they have to wear a full sleeve shirt, but for girls, you always have to wear half sleeve shirt. Apart from these things, you just can't afford to have a criminal record, क्योंकि aviation में उनके लिए कोई एंट्री नहीं है. सो एंड दैट्स व्हाई दे आस्क फॉर द पासपोर्ट इन इंटरव्यू इटसेल्फ. चाहे आप इंटरनेशनल फ्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, बट वो सबसे पहले आपसे पासपोर्ट पूछते हैं. इफ़ यू डोंट हैव द पासपोर्ट फॉर दैट टाइम, देन यू कैन जस्ट गेट द पुलिस वेरिफिकेशन डन, एंड आफ्टर दैट यू मे जस्ट अप्लाई फॉर द पासपोर्ट. एंड इफ whenever you receive your passport, you can just tell them that my passport is here. But before that, police verification तो वो करवाते ही हैं, because that is a must. Apart from all these 3 things, if you have a tooth gap or tangled teeth or maybe uneven teeth, then you cannot go for that interview. So if you apply for the interview and you go there, then you might get disqualified. Apart from this, you need to have a very clear skin for being a cabin attendant, because once they check your skin, if there are very like so many boils on your face, or it's an acne prone skin, then they might just disqualify you, because you will have to wear makeup on a regular basis on your face. So अगर आप makeup करते हो तो और ज़्यादा वो चीज़ बढ़ने के chances होते हैं. So if you have such issues, then just visit a dermat and just get rid of it, because that will definitely disqualify you in the interview of a cabin attendant. Then your body mass index should be in the range of the standards of the airline. Other than this, if you are scared of flying, then you cannot afford to join this particular profession, because you'll be flying on a regular basis. So I guess that might just disqualify you in the interview, because okay, you might just get used to it, but if you are really scared of flying and you just can't get out of that fear, then don't join this, because it's not meant for you. Because there are some passengers who are really afraid of flying, and when they come on the aircraft, or like when they fly, तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. So in that case, if you would be panicking, then how would you manage the passengers? So that is a big no. Apart from all this, your body must be healthy and fit. You must be fit to fly. So that's why once you get selected in the one-on-one interview and all that interview process, like GD and everything, then you have to get your medical test done. बहुत सारे टेस्ट होते हैं उसमें. So अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो you will be disqualified. अगर वो चीज़ सॉर्ट हो सकती है, well and good, they will give you some time like 1 month or so. और अगर वो चीज़ नहीं हो सकती, like one of my friend, there was a stone detected in her liver.
when while this medical tests were done. So उनको टाइम दिया गया था अराउंड 1 to 2 months फॉर दैट, एंड देन शी गॉट द जॉइनिंग. वापस से उनके मेडिकल टेस्ट हुए एंड देन शी जॉइंड एज अ कैबिन अटेंडेंट. सो यू माइट जस्ट गेट डिस्क्वालिफाइड, और अगर वो चीज़ सॉर्ट हो सकती है तो आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा उस चीज़ के लिए. Apart from all this, if one has hearing or vision issues, then that candidate might just get disqualified, because hearing issues तो मतलब बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना ज़रूरी है, एंड आपको मतलब पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है. एक छोटी सी भी नॉइस, छोटा सा भी साउंड कैसा है, किस चीज़ का है, आपको रिकग्नाइज़ करना पड़ता है कि मतलब वो कुछ भी हो सकता है. इफ़ देयर इज़ सम हिसिंग साउंड एंड इफ़ यू आर अनेबल टू हियर दैट, देन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए ऑन बोर्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर विजन का कोई इशू है तो यू माइट जस्ट वेयर लेंसेज. कोई एयरलाइंस में अलाउड है, किसी एयरलाइन में अलाउड नहीं है. सो अकॉर्डिंगली दैट वो एयरलाइन का कॉल है कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. अदर दैन ऑल दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट स्विमिंग इज़ ऑल्सो मैंडेटरी इन सम ऑफ द एयरलाइंस. सो यू नीड टू नो बिफोर हैंड्स व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू. यू शुड नो कि वो एयरलाइन में स्विमिंग कंपलसरी तो नहीं है. अगर है तो यू मस्ट नो स्विमिंग, एंड इफ़ यू डोंट नो यू विल जस्ट गेट डिस्क्वालिफाइड. इफ़ यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन skills, good interpersonal skills, or maybe you're not good at English, then also you might just get disqualified in this interview, because English is a must. That is the universal language for aviation, because आप कहीं पर भी जाओगे, whether international or domestic, if somebody doesn't know the other language, then at least you'll be able to communicate with them in English. But अगर आपको English भी नहीं आती है, then how would you communicate with them? So that is a must. And apart from that, if you know any other language, then that would be a plus point for you, and वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. बट येस, इन इंडिया इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर एन इंटरव्यू, देन यू मस्ट नो हिंदी ऑल्सो, बिकॉज नॉट ऑल द पैसेंजर्स वुड बी नोइंग इंग्लिश एंड नॉट ऑल द पैसेंजर्स वुड बी नोइंग हिंदी. तो उस चीज़ के लिए आपको दोनों ही लैंग्वेजेस आनी चाहिए. And you just can't tell the interviewer that just because you belong from Bengal or South or कहीं भी ऐसी जगह से जहाँ पर हिंदी ज़्यादा नहीं बोली जाती है, so I don't know हिंदी, because आप वहाँ पर एज अ कैबिन अटेंडेंट काम करोगे तो you must know हिंदी एंड इंग्लिश at least, so that. और अगर उसके अलावा कोई और रीजनल लैंग्वेज आपको पता है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर्स को हिंदी इंग्लिश भी नहीं समझ में आती है और वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही सिर्फ बात कर सकते हैं. सो इन दैट केस इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग एंड व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू कन्वे टू देम. So I guess that's all for this question, and that's all for today, and I'll just get back to you with the next video very soon.